अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस 2024 का जो जनरल साइंसिबिलिटी का आज का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। तो मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज था, इन फिश लिवर ऑयल देयर इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई एंड विटामिन ए एंड विटामिन डी। द करेक्ट आंसर जो था इनका वो था विटामिन ए एंड विटामिन डी, ऑप्शन 4 था। फिर नेक्स्ट हमारे पास द केमिकल फार्मूला फॉर ऑलम इज टिपिकली रिटन एज, तो उसका फार्मूला जो था वो ये था KL4SO4 होल ट्वाइस 12H2 था इसका फार्मूला। फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल, 23 Feb एंड 21 September, 21 March एंड 23 September, या 23 March एंड 11 September, या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन था इसका 21 मार्च और 23 सितंबर को डे और नाइट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। उसके जो ऑप्शन हमारे पास थे 18, 27, 48 या 84, इसका ऑप्शन था 84। फिर नेक्स्ट हमारे पास था इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज 3 times then the area of the circle is increased how much times? 3 times, 9 times, 6 times और none of these। करेक्ट ऑप्शन जो इसका था वो था 9 times, ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास था 1 degree of longitude of the equator is equal to a distance of 49 miles, 69 miles, 39 माइल्स और 60 माइल्स। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 69 माइल्स, ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ अल्कोलाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, या शॉर्ट रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड या लॉन्ग रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड। इसका करेक्ट आंसर था लॉन्ग रेंज चेन ऑफ अमीनो एसिड, ऑप्शन 4। फिर नेक्स्ट हमारे पास था द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन था 4, विटामिन ए। फिर नेक्स्ट द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था प्रोटॉन, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास था द पीएच ऑफ सॉइल इज रेज्ड यूजिंग लाइमस्टोन, जिप्सम, यूरिया और नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर था इसका वो था लाइमस्टोन, ऑप्शन 1। Next, which of the following is used for measuring distance? Coulomb, light year, farad और curie। तो इसके लिए हम light year को इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट था। फिर which of the following contain a greater number of carbon atom for 1 mole of each compound? Chloroform, methanol, water और ethanol। जो करेक्ट आंसर था वो था ethanol, ऑप्शन 4। A pencil dipped in water appears bent due to रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर था वो था रिफ्रैक्शन, ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट था फिश डाई आउटसाइड द वाटर ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, सनलाइट और नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो करेक्ट आंसर था वो था नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन 4। फिर था इन डायमेंशिया अ पर्सन लॉस हिज वेट, लॉस थिंकिंग एंड राइटिंग, लॉस थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर था वो तो लॉस थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग, ऑप्शन 3। फिर था अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, वेवगाइड, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ और हाइड्रोमीटर। इसका करेक्ट आंसर था सिस्मोग्राफ, ऑप्शन 3। फिर अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड व्हेन द वार्म एयर राइजेस अप ओवर द ओशन, व्हेन द मॉइस्ट एयर राइजेस अप ओवर द ओशन, व्हेन द मॉइस्ट एयर प्रेस्ड डाउन ओवर द ओशन, और व्हेन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप ओवर द ओशन। इसका करेक्ट आंसर था when warm and moist air rises over ocean, ऑप्शन 4 था इसका आंसर। फिर why a red light is used in traffic signals for danger? तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर था ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 3। फिर the heavy water is denoted by D2O and contains simple hydrogen, denoted by H2O and contains deuterium, denoted by D2O and contain deuterium, or denoted by H2O and contain simple hydrogen। इसका ऑप्शन था denoted by D2O and contain deuterium। फिर था ionosphere is located within the thermosphere and extends, उसकी कहाँ से कहाँ तक extend होता है, from 60 to 300 किलोमीटर, from 50 to 200 किलोमीटर, from 50 to 300 किलोमीटर और none of these। तो करेक्ट ऑप्शन था फ्रॉम 50 to 300 किलोमीटर, ऑप्शन 3। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज जनरल साइंसिबिलिटी के। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेपर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।